आपको संगीत तो सुनाई देगा ही। संगीत चाहे आज का हो या आने। The issue that has been now under discussion, Honorable Prime Minister, Honorable Leader of the Opposition, Honorable Deputy Speaker, and other colleagues who spoke on the issue of the members who are going to retire today. On that issue, I would like to associate myself, and I know 1991 I came to Lok Sabha. Dr. Manmohan Singh was the finance minister and Narasimha Rao was the prime minister. And at that time, 130 tons of gold was pledged to see that the country should not go to debt trap. I know this. Sir, what Manmohan Singh has done on that day to save the country under the leadership of Narasimha Rao, I know. And I can speak volumes. I don't want to take much time. Mr. Kargeji has referred my name. Devoda has, it's a fag end of his life. He changed his political, what he said, I don't want to repeat. But only one thing I would like to tell very frankly. Please, sir, I am not going to hurt anybody. Those people who are going to retire from this house today, they are all senior leaders and ministers and senior members of this house. Some people may come back again, but only one thing I would like to make it clear to Mr. Karge, in fact, I was not prepared to come to this house. In Congress itself, they want to put up a second candidate to defeat me. At that time, Karge has said, if Gowda is going to be defeated, I will withdraw. Mr. Karge has made it very clear, I don't want to contest. In fact, he asked me to contest. And Congress wants to put up a second candidate to defeat me, his own friends. And Karge told, if Devoda is going to be defeated, I will withdraw. That is why I am grateful to him. Mr. Karge, I am really tell you, do you want to become the Prime Minister of this country? Will Congress tolerate? Please tell me, I know what Congress. I am not going to anything beyond this. I can't say. You are a person who are clean, who worked for nearly 35 to 40 years. But what has happened? When somebody has referred your name to become the Prime Minister or to become the leader of the IIA, that has been countered by their own friends. I have not come here. Karge is a man whom I like him. I want he should become the Chief Minister. When my son, the Congress High Command took the decision, Mr. Kumar Swamy should be the Chief Minister. When Congress High Command, I don't want to take the names of any top leaders. They came, Ghulam Nabi Azad, the member of this house, and Raja Sant, ex-Chief Minister, came and requested me, sir, please allow me. I heard, please allow me. At that time, I told, I don't want my son to become the Chief Minister. Let Karge become the Chief Minister. He is here. Let him tell.
But High Command has told that Kumar Swamy should become the chief minister. Sir, at that time, at that time what has happened? Kumar Swamy made the chief minister within 13 months. Who removed? Not Karge. Who removed? Kumar Swamy. Not Karge. It is only the Congress leaders. Please understand, Karge is one of the honest men to come to the highest place. Will people tolerate? Will not. What has happened in Andhra? I know. I can go quote several instances. Mr. Kargeji, this country we know. Sir, I have not changed this party from party to party in my life. Raju Chandrasekhar is here. He is there. Had I made any aspiration when I recommended your name first to become to Rajya Sabha? You are now a minister and a senior leader. You are going to do it. I wish, including Naddaji, other senior leaders should come back to this house. I have not made any written speech. What Kargeji has said, what our deputy chairman has said, so many names. I have not written any names. I would only tell you, I lived with all sincerity and honesty. I have not changed the party for any personal gain, nothing doing. I want to save my party. When my party, some of the congressmen wants to destroy the party, I don't want to name them. They are not here in this house. I know the limitation. The Congress leaders wants to destroy my party. I have taken the decision to extend my support to BJP. That's the only thing. Hari Saab, you are an honest man. You raised my name. And about Manmohan Singh, he is an honest man. Honest man to the core. A day when Manmohan Singh cried, for the mistake committed by those top leaders in Congress, Manmohan Singh cried. I know that day what has happened. A man who has cried, who ruled this country for 10 years, who gave the country to save from the death trap, Manmohan Singh, who served the nation with all honesty, cried in a situation when 2G sector was discussed in the very same house in the Lok Sabha. I know so many things. I cannot go on, drag so many issues, so many chairmen who sat in the same seat, cried in the same house. I can name them. I know, sir, with all sincerity in this country, this country today, democracy, somebody says democracy in danger. Nothing. I would like to tell you only one thing. Democracy is in the heart of the people of this country. Doctor, Thank you, sir. I would like to tell you, Ambedkar, who has given this Bhagavad Gita, or what you call, Thank you, sir. Thank you. what you call Ambedkar, has given this constitution which is in the blood of every Indian. Nobody can change the democracy to come to a dictatorship. Nobody. I would like to tell you, in the last leg of my life, I have not come for any personal benefit with BJP. I love deforestation. I told the love and affection shown by the present Prime Minister when I went to his chambers in the very same building. The love and affection he has shown. That is the only thing which I have got the benefit from this present Prime Minister. There is nothing. Yesterday he discussed
some about the what is called Kadagolla, whether it is going to be done or not. I have done my duty. I am not going to ask anything personally for myself. When my son was removed by the Congress, that is the day I told my son, go with BJP. That is the day I told this Congress you, cannot allow you to grow. I told Thank you, former Kumaraswamy, Prime Minister. you go with BJP. Thank you, That's sir. all what I said. Shri Nothing beyond that. Sukhendu Shekhar Ray. I'll give you time. थैंक यू सर I'll give you time. सर आज Sir. सुबह से Nothing will go on record. Pramod ji, nothing will go on record. You send a slip and I'll deal with it. Please, nothing will go on record. No, nothing. No, please, sorry. Shri Sukhendu Shekhar Ray. थैंक यू सर Sir, let me tell the honorable members, there are times when a person speaks यस out of huge experience, not through his mind, out of his heart. We are more enlightened now about Mr. Khadge, a man who has known him for so many years, and he says Mr. Khadge is full of sublimity, honesty. But this is the culture of this house, and how he is indigestible. Those are the issues raised, Mr. Sukhendu Shekhar Ray. थैंक यू सर वन सेकेंड आज सुबह से करीबन 1 घंटा हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी विषय पर जब 2 साल की अंतर इस सभा में हम करते हैं। आज 68 मेंबर्स जो रिटायर कर रहे हैं, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समय का पाबंदी है, मुझे मालूम है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला कि कुछ लोग जा रहे हैं वापस आने के लिए और कुछ लोग शायद वापस नहीं आ पाएंगे, एकदम सही बात है, ये हमेशा होता रहता है। लेकिन जो लोग those who will be retired ultimately on this in the month of April, they may be retired, but according to me, they won't be tired, because even after completion of their term, they will work within the party, for the larger interest of the society in different capacity. I sincerely hope and believe. मैं हमारा वक्तव्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ कि समय की पाबंदी है। मेरे ओर से, मेरा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से सभी के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आज तो सब कोई भावुक बन गए, मैं भी भावुक बन गया। कभी कभी मुद्दे पर हम लोगों का तर्क वितर्क होता है, लेकिन मैं कभी अपने को विरोधी नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को प्रतिपक्ष समझता हूँ। इसलिए रूलिंग पार्टी का जो ऑनरेबल मेंबर्स रिटायर कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही श्रद्धा है मेरे मन में, जो कि प्रतिपक्ष की जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं उनके लिए भी बराबर श्रद्धा है मेरे मन में और भविष्य के लिए भी रहेगा। मैं अंत में सिर्फ एक पुराना हिंदी गाने का एक लाइन आपकी इजाज़त से बोलना चाहता हूँ। मैं गा नहीं पाता हूँ, लेकिन वो बोल जो है, ये किशोर कुमार जी का एक मशहूर फेमस गाना है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद सर। Honorable members, agenda items 2 to 20 will be taken from 12:30 p.m. onwards, and then we'll resume this.
Till that, we will continue with our present discourse, if the House so agrees. Okay. Dr. Sasmit Patra and the honorable retiring members who wish to speak may kindly give their names to the table office. Honorable Chairman, sir, thank you for giving me this opportunity. I'll be brief. Knowing the paucity of time, on behalf of the Biju Janata Dal and our leader, Shri Naveen Patnaik ji, we extend our felicitations, we extend our best wishes to each and every retiring member. There are 68 retiring members, and during the course of their tenure, each of them have enthralled and really added to the great richness of this House and the Parliament. Wherever they will be, whatever they will do, it will never be a farewell. It will be only another transition to doing something more stronger, more better. I'd like to specifically mention about two members of the Biju Janata Dal Legislature Party who are retiring today. It's an emotional moment for them when I speak about them, because जब मुझे फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी दी गई थी, मेरा ऐसा कुछ अनुभव नहीं था, मगर डॉक्टर अमर पटनायक जी और डॉक्टर प्रशांत नंदा जी दोनों दो बड़े भाई की तरह जिस तरह से मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लेजिस्लेचर पार्टी को आगे लेके गए, आज जब डॉक्टर अमर पटनायक जी और डॉक्टर प्रशांत नंदा जी के लिए आज यहां पर दे आर पार्ट ऑफ द रिटायरिंग मेंबर्स, I feel a very heavy heart, because the BJD legislature party learned a lot from them, and I'm sure the honorable members across the House also learned a lot from them in terms of their interventions and in terms of the kind of deliberations that they did. Manya Adhyaksh Mahoday, Dr. Amar Patnaik ji, from the time he has come to the House, हम सभी उनके intervention से, whether it's international affairs, economics, budget, we've all gained so much in terms of his intervention. Dr. Prashant Nanda ji, the man who has been a forefront of cinema, art, culture, has enthralled all of us together with his interventions. मैं बस यही आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण जो आज फेवर ले रहे हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, आप सभी को शुभकामनाएं। और बस रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उस 4 लाइनों को कह के मैं अपना वक्तव्य रखूंगा। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. हर एक सदस्य, उनके पास इतनी क्षमता है, इतनी विनम्रता है और इतनी प्रचेष्टा है कि आने वाले दिनों में वो अपनी जिंदगियों के माध्यम से इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी जो बहुमूल्य कंट्रीब्यूशंस देते जाएंगे। इसी के साथ बीजू जनता दल की तरफ से सारे 68 मेंबर्स जो रिटायर कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। नमस्कार। Sri N.D. Gupta, a retiring member who has already made a comeback. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, मुझे आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का आपने अवसर दिया। आज हमारे साथी, जैसे बताया गया, 68 मेंबर रिटायर जुलाई, पिछले सितंबर से लेकर अगली जुलाई तक रिटायर हो रहे हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ होना है। प्लीज हमारे भी प्लीज लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, प्लीज, you were showing your back to the chair for a very, very long time. Please. हमारी पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी 3 मेंबर्स
रिटायर हुए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है, और उनमें से मैं और संजय सिंह जी दोबारा चुन के आगे हैं। इतने भी मेंबर रिटायर हुए क्योंकि मैं पहली बार, ये मेरा पहला टर्म था और मेरा कभी राजनीति से कोई संबंध भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ आने के बाद जो मेंबर्स हमारे साथ जितने भी हैं, बहुत सीखने को मिला और एक देश दुनिया के देश के बारे में किस प्रकार से यहाँ पे सार्थक डिस्कशन होता है, उसकी गवाह के रूप में रहा मैं। और अधिक समय न लेते हुए मैं, जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, उनके भविष्य के लिए वो किसी न किसी नई भूमिका में काम करेंगे, कुछ पुण्य चुन के आएंगे, उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और अब उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभेच्छा करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। डॉक्टर के केशव राव। Sir, you said it is an emotional moment, rightly said so. And when hearts are full, you hardly speak, scarcely can speak. The question is, I cannot but join the sentiments of all the members who spoke, expressed themselves. केशव जी, but not that sentiment of खड़गे जी कि वो मेरे सामने ही लड़ते हैं, बाहर नहीं लड़ते हैं. तो सही है ना? We will talk to him in the chamber also. No, but that is the truism. That's That we must true. also realize. Yeah. So, vis-a-vis the members who are retiring, their contribution to the House for last 3 years that they have been here, and the wisdom that shared with us, not shared with us, the wisdom that gave us will be very lasting. I have nothing more than say, but really shocking, as Shiva said, the 58 members whose name were not read but were referred to. And I'm really taken aback. I'm really sorry, but I knew that Agri was retiring, and it was a personal thing because her contribution in the committees was so great. So is everybody. The Patnaik ji retiring from this, I'm talking to him, and the ministers, Yadav ji, Bhupendra Yadav ji, and Dupala ji, and also our Dharmendra ji, they have really been good, but I know that it will really come back. Whatever it is, all the people, I don't want to say, Jaya Bahaduri is not today's Jaya Bahaduri. 10 years back, she was the most active lady found in the house because I'm here for the last 20 years, so that I'm telling you. So, Jaya Bahaduri. The question is, whatever it is, why Jaya Bahaduri is all right for you. So the question is, we had really the best of the lot. As Shivaji said, that we really not only cherish, we would really gain by that. What we needed, the fighting spirit in a lot of people who are now retiring. As far as my Telangana is concerned, sir, 3 of our members are retiring. I hope one of them would come back. That is my hope, but they would come back and they have much to contribute. And equally, I thank you, Patnaik ji. I share, as I told you, when heart is full, nothing can be said at all, but I share whatever you said, particularly Arvind ji, Deputy Chairman Sahab, the way you presented the contributions of ours to this House, and also the contribution that perhaps we would make next, because as the Prime Minister said, from Rajya Sabha we go to Jana Sabha. And particularly when I see Trivedi ji and also Rakesh Sinha, I'm really thankful, but they have been a wisdom to their party, a very dogmatic sometimes in their approach. They have tried to throw some kind of a light and enlightenment, which whether they took it or not, I don't know, but they have been very good. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, माननीय डॉक्टर के सराव जी. माननीय श्री प्रेमचंद गुप्ता जी. माननीय श्री प्रेमचंद गुप्ता नहीं. माननीय श्री इलामारम करीम जी, not present. माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी. List of speakers. Wait. Right? I am waiting for the list of speakers in the screen.
हाँ, माननीय श्रीमती जया बच्चन जी, प्लीज। आप अपने अनुभव बताएं। बहुत हम सबकी कामना है वो रिटायर नहीं हो रही हैं। क्या बोले? थैंक यू सर। 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है। और जो मेरा अनुभव रहा, अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती हैं। अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं। जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इर्रेलेवेंट ना बनाएं। ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे, और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे, एक समय में ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी, माननीय श्री परसोत्तम रूपाला जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर सीएम रमेश जी, डॉक्टर सीएम रमेश जी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, प्लीज। डेप्यूटी चेयरमैन सर, माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर, आज इस सम्मानीय सभागृह में मेरा 12 साल पूर्ण हो रहा है। मुझे पता याद है, आज से 12 साल पहले गुजरात में मैं संगठन में काम करता था और हमारे विधानसभा के स्पीकर का निधन हुआ था और एक बाई इलेक्शन चल रहा था। मुझे वहाँ सूचना दी गई कि आपको राज्यसभा में जाना है। मैंने कभी दिल्ली देखी नहीं थी और मैंने राज्यसभा और लोकसभा एक ही परिसर में होती है ऐसा पता नहीं था, और मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा। जब मैं राज्यसभा में इलेक्ट होके आया, स्वर्गस्थ जेटली जी ने भी मेरे साथ वोट लिया था, और जब हम वहाँ से गुजरात से आए, जेटली जी के चैम्बर में मिले, जेटली जी ने हमें 2 बात कही थी कि आप विधानसभा में तो रहे हैं, लेकिन दिल्ली का कल्चर, रीति नीति, कार्य पद्धति और ये संसद का उपला गृह है, अपर हाउस है, उसमें बहुत विद्वान लोग होते हैं, सभी स्टेट से होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं,
कई लोग सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हुए होते हैं, कई पूर्व प्रधानमंत्री है, कोई पूर्व मिनिस्टर है, कोई सदस्य सालों से 5-5, 6-6 टर्म से राज्यसभा में है। पहले 6 महीने तक उसको सुनना, उससे सीखना। और उस वक्त हमारे पुरानी पार्लियामेंट में हम ओपोजिशन में थे, कोने में बैठते थे। 6 महीने तक सभी को सुनता रहा, समझता रहा। और उस वक्त कई कमेटी में भी हम लोगों को रखा गया। उस वक्त पार्टी में मैं विशेष काम करता था, इसलिए पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में मैं कम आता था। उस वक्त KC त्यागी जी जैसे विद्वान सांसद भी हुआ करते थे, मेरी एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मैं 3 बार एब्सेंट रहा, तो 3 बार एब्सेंट रहने के बाद उन्होंने एक बार मुझे कॉल करा कि आप चौथी बार नहीं आएंगे तो मैं आपको कमेटी से निकाल दूंगा। और हुआ ऐसा कि मैं चौथी बार नहीं आ पाया और मुझे कमेटी से उन्होंने निकाल दिया। तो बाद में मैं पार्लियामेंट में आया और सेशन शुरू हुआ, मुझे मिला। उन्होंने मुझे प्यार से कहा कि मैं डिसिप्लिन का आग्रही हूँ और मैंने आपको वार्निंग दिया था, आप नहीं आया, मुझे आपको हटाना पड़ा। उसको बुरा मत मानना, उससे सीखना, नियमित रहने का। KC त्यागी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन सिखाई। और तब से मैं आग्रही रहता हूँ कोई भी मीटिंग में टाइम पे पहुँचना। पॉलिटिकल काम भी होता रहता है, लेकिन पार्लियामेंट की प्रोसीजरल एक्टिविटी में उपस्थित रहना, KC त्यागी जी का आज के अवसर पर मैं उल्लेख भी करता हूँ, उसको धन्यवाद भी करता हूँ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, ये महान सदन में मुझे कई घटना का साक्षी बनने का अवसर मिला। हम हमेशा कहते थे, जब स्टूडेंट लीडर थे, विधानसभा में थे, स्टेट में पार्टी में काम करते थे, मेरी पार्टी की विरासत है। हम सब बोलते थे, जहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे पिताजी ये ज़माने में जनसंघ में काम करते थे और वही ये नारा लगाते थे। ये नारा हम घर पे सुनते थे और उसको उस वक्त कल्पना नहीं थी कि वो तो ये ज़माने में वो कभी इलेक्ट होंगे, कभी असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। उसके लिए वो काम नहीं करते थे। वो काम करते थे भारत माता की जय के लिए। वो काम करते थे कि एक पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी, पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो धारा 370 हटाएगी, ये पार्टी कभी सत्ता में आएगी तो भारत माता को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करेंगे। यही कल्पना से वो लड़ते थे, मेहनत करते थे। मैं छोटा था, मेरे घर पे देखता था, समझता था। और प्रधानमंत्री जी मेरे पिताजी आज नहीं रहे, लेकिन जब 2020 में संसद में धारा 370 हटाई, वो 100 साल की आयु के थे। मैं उसमें वोटिंग करके घर पे गया। वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन भी जब मैं घर पे गया, वो उठ के गेट तक आ गया बाहर और उन्होंने गौरव महसूस किया। उसकी आंखों का आंसू को मैं वंदन करता हूँ। उन्होंने गौरव लिया कि मेरा बेटा धारा 370 हटाने के पार्लियामेंट के कानून में साइन करके आया है, वोट करके आया है। दोस्तों, ये सब लोगों ने जो पुरुषार्थ किया था, परिश्रम किया था, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी आइडियोलॉजी के लिए, विचारधारा के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, ऐसे लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। और उनकी विरासत के रूप में मुझे यहाँ ये महान ग्रह में आने का अवसर मिला। मैं ये भी घटना कही, यही सदन में धारा 370 हटने की घटना का मैं साक्षी रहा। GST जैसे कानून मेरे ही समय के दरमियान पारित किया गया। 3 तलाक का कानून हो, महिला आरक्षण हो, न्याय संहिता हो, जैसे महान रिफॉर्म जो आने वाले दिनों में, जब देश अमृत काल से गुजर रहा है और जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाता हो, यानी कि जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, देश की आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, और उस वक्त की जनरेशन विकसित भारत को देख रही हो, उस वक्त वो याद करेंगे कि ये देश में एक बार, मैं जब छोटा था तो पढ़ता था चंद्रगुप्त मौर्य का सुवर्ण काल। डिप्टी चेयरमैन साहब, मोदी जी का सुवर्ण काल को याद करेंगे, तब ये सब कानून भी उसके संज्ञान में आएंगे और हमें गौरव महसूस होगा, या तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को गौरव महसूस होगा कि हमारे फादर ने या हमारे फोरफादर ने एक कानून बनाते वक्त उन्होंने अपना योगदान दिया था, अपना वोट दिया था।
इस घटना का साक्षी बनने के लिए मैं स्वयं मेरी जात को गौरव महसूस करता हूँ। माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, यही सदन में जब हम ऑपोजिशन में बैठते थे, जेटली जी थे हमारे साथ, वेंकैया नायडू जी थे, रविशंकर प्रसाद जी थे, ओपोजिशन में रह के जिस तरह से तर्क वितर्क करके अपनी बात को रखते थे, मैं सदन में पी राजीव को भी देखा है, वो कम्युनिस्ट एमपी थे, उनकी तर्क करने की एक शैली थी। और कोई भी हाउस में कोई भी बिल हो और कोई भी हाउस की कार्यवाही हो, उसका कुछ न कुछ इनपुट्स रहता था, उसकी तर्क करने की शैली को हम समझते थे। वैसा ही केसी त्यागी जैसे, शरद यादव जैसे नेता जो अपने कमिटमेंट के लिए अड़े रहने, अकेले हो जाने के बाद भी अपनी बात पर अड़े रहने वाले लोगों को भी इस सदन में, महान सदन में हमने देखा है। ये पार्लियामेंट का अपर हाउस होने के नाते 12 साल तक मेरी पार्टी ने, आदरणीय मोदी जी ने मुझे इस हाउस में मेंबर के रूप में काम करने का अवसर दिया। 2016 में मैं स्टेट मिनिस्टर बन के काम करना चालू करा। राज्य मंत्री के रूप में भी मैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन में मुझे जाने का अवसर मिला, दोनों सदन को समझने का भी अवसर मिला। और माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जब देश में कोविड चल रहा था, ऐसी विपरीत परिस्थिति में मोदी जी ने मुझे भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में दायित्व दिया। उस वक्त दिल्ली के गलियारों में बात होती थी कि अननोन आदमी है, एक कोविड की ये स्थिति को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि मैं इतना परिचित इस गलियारों में नहीं था। लेकिन इस सदन में उस वक्त मैंने कोविड के संदर्भ में कई बात कही, कई बार मैंने सार्वजनिक एज ए मिनिस्टर के रूप में कई विषय रखे। माननीय चेयरमैन सर, मोदी जी के नेतृत्व में मुझे हेल्थ मिनिस्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला। मैं एक घटना का साक्षी बना कि देश जब कोविड के पहले और जब कोविड के शुरुआत के दिनों में जब दुनिया के साथ हम बात करते थे, तब दुनिया कहती थी कि इंडिया कैसे कोविड मैनेज करेगा। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। ये स्थिति में इंडिया में कैजुअलिटी कितनी होगी, उसके आधार पर दुनिया अपना एस्टिमेट लगाती थी कि दुनिया में कितनी कैजुअलिटी होगी। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश में कोविड मैनेज करा, जिस तरह से मैं मार्गदर्शन करा, और मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह से देश में काम करा, उसका नतीजा ये निकला, जब ओमिक्रॉन वेव खत्म हुआ और G20 समिट हो या तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, जहाँ भी सभी जगह पे मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मुझे खुशी है कि बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े कंट्री हेड ने, जब मैं उसकी अपॉइंटमेंट लेके मिलता था या तो वो मुझे मिलते थे, तो पहला उसका सेंटेंस था, कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। दोस्तों, ये माननीय चेयरमैन साहब, इस स्थिति से भी काम करने का मुझे अवसर मिला। इस सम्मानीय सदन ने परस्पर, जब पॉलिटिक्स में कई बार पॉलिटिक्स होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कई विषयों पर बहुत डीपली डिस्कशन होता है, ध्यान से समझते हैं तो उसके तर्क में कई मार्मिकता भी होती है, चाहे सरकार के पक्ष से हो, चाहे ओपोजिशन की ओर से हो। सभी को सुनने का मुझे बहुत रुचि लगती थी। 12 साल की, यानी कि 12 इयर्स की इस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ, मैं समझा हूँ। मेरे से हो सका इतना दिया है, लेकिन बहुत कुछ लेके जाता हूँ। आप सब साथियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 7th February 2024 passed 1. The appropriation vote on account bill 2024, 2. The appropriation bill 2024, 3. The Jammu and Kashmir appropriation number 2 bill 2024, 4. The Jammu and Kashmir appropriation bill 2024, and 5.
the Finance Bill 2024. The Speaker has certified that these bills are money bills within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy each of the said bills on the table. Papers to be laid on the table. Mani Dr. Jitendra Singh. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 1, serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, Deputy Chairman, sir. Mani Sri Arjun Ram Meghwal. Mani Sri Ashwini Kumar Chaube. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यावली के क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। माननीय श्री वी मुरलीधरन। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Professor S.P. Singh Baghel ji, I rise. उन्होंने चिट्ठी दिया पहले इसने दिया होगा ना अगेन मिस्टर माननीय वी मुरलीधरन जी, आपका 2 बार नाम। With your permission, respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 22 in today's revised list of business. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। माननीय श्री वी मुरलीधरन जी। Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 25 in today's revised list of business. Again, माननीय श्री वी मुरलीधरन जी। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Rameshwar Teli ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 27 in today's revised list of business. डॉक्टर मुंजा पारा महेंद्र भाई। 28 भी है। Your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 9 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. डॉक्टर एल मुरुगन। Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2, class 10 of today's revised list of business. श्री निशीत प्रमाणिक। माननीय श्री निशीत प्रमाणिक। माननीय श्री वी मुरलीधरन। Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Nishit Pramanik ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 211 in today's revised list of business. Now we move to reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. Dr. Abhishek Manu Singhvi, not present. Mani Sri Ajodhya Rami Reddy. Sir, I wish to present a copy each in English and Hindi of the following reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce. 186th report on action taken by government on the recommendations, observations of the committee contained in its 181st report on development of trade and industries in Northeastern region and 187th report on comprehensive strategy to map major products and countries to maximize exports and minimize imports. Thank you, sir. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family. Mani Sri Bhuneswar Kalita. Sir, I rise to present a copy each of the following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. Number 1, the 152nd report on the action taken by the government on the recommendation observation contained in the 144th report of the demands for grants 23-24, demand number 47 of the Department of Health Research
Ministry of Health and Family Welfare. Number 2, the 153rd report of action taken by the government on the recommendation of observations contained in the 145th report on demands for grants of 2023-24, demand number 4 of the Ministry of Ayush. Number 3, 154th report on action taken by the government on the recommendation of observations contained in the 143rd report on the demands for grants for 2023-24, demand number 46 of the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, and number 4, 155th report on the functioning of the central government health scheme. Thank you, sir. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I raise to present following reports in English and Hindi of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism, Culture. 364th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 343rd report on demands for grants 2023-24 of Minister of Tourism. 365th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 350th report on the subject development of greenfield and brownfield airports and issue pertaining to civil enclave in defense airports. 366th report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the committee contained in its 353rd report on the subject issue of fixing of airfares. 367th report on the subject operations and maintenance of national highways and management of toll plaza. 368th report on the subject status of shipbuilding, ship repair and ship breaking industries in the country. And 369th report on the action taken by the government on its recommendations, observations of the committee contained 352nd report on the subject functioning of major ports in the country. Thank you, sir. Thank you. Now, reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. माननीय श्री विजयपाल सिंह तोमर. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने अंकित क्रम संख्या 6 पर विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2023-24 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सवाल तौर पर रख रहा हूँ. नंबर 1, औसत विभाग रसायन उर्वरक मंत्रालय से संबंधित चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन संबंधी 50वां प्रतिवेदन. नंबर 2, रसायन पेट्रोकेमिकल विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित रसायन उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समीक्षाओं सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन. और नंबर 3, उर्वरक विभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित उर्वरकों पर जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरक उत्पादन और आयात नीति आयोजन के संबंध में विभाग संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 43वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विषय समिति की समीक्षाओं सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन. Thank you. Now, report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Defence. माननीय Lieutenant General retired Dr. D.P. Batsi. Dr. D.P. Bats. Sabhapati ji, I rise to lay a copy of the 47th report pertaining to the review of functioning of Jila Sainik boards in country, both Hindi and English version, of the Standing Committee on Defence as listed against my name in today's list of business.
Thank you. Thank you. Now, report of the department-related Parliamentary Standing Committee on House and Urban Affairs, माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा। माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध स्मार्ट सिटी मिशन, एक मूल्यांकन विषय पर विभागों से संबंध संसदीय आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण 17वीं लोकसभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद सर। Now reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology, माननीय श्री लहर सिंह सिरोया। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 54वां, 55वां, 56वां और 57वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। नाउ रिपोर्ट्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। Sir, with your permission, I rise to lay the Hindi and English version of the report number from 104 to 123rd. Total number of 20 reports of the Public Accounts Committee 2023-24 as listed against my name in the today's list of business. धन्यवाद। Now report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj, माननीय श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज, माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय श्री सकलदीप राजभर, आप रिपोर्ट लेकर। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन विभिन्न विभागों, संगठनों, संस्थानों में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 30वां प्रतिवेदन, श्रम और रोजगार मंत्रालय के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रोजगार के अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 31वां प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के कल्याण के लिए किए गए उपाय के संबंध में 32वां प्रतिवेदन और गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय के संबंध में एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Now report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Petroleum and Natural Gas, माननीय श्री मिथिलेश कुमार। माननीय श्री मिथिलेश कुमार। माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस स्थायी समिति का 24वां हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Now reports of the Committee on Public Undertakings, Dr. Anil Jain. सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 14(1) पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी एवं अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। मान्यवर, मैं 23वें प्रतिवेदन की भी एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। Now statement by Minister,
Dr. Jitendra Singh ji. Sir, with your kind permission, I rise today on the table of the House a statement regarding A, the status of implementation of the recommendations contained in the 325th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. B, the status of implementation of the recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change pertaining to the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. C, the status of implementation of the recommendations contained in the 341st report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests and Climate Change on the demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. D, the status of implementation of the recommendations contained in the 351st report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forests, Climate Change and on demands for grants 2021 of the Department of Atomic Energy. And E, the status of implementation of the recommendations contained in the 358th report of the Department-related Parliament Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest, Climate Change on demands for grants 2023 of the Department of Atomic Energy. Thank you, Deputy Chairman, sir. धन्यवाद. For Sri Arjun Ram Meghwal ji, माननीय श्री V मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Arjun Ram Meghwal ji, I rise to lay the statements showing action taken report on the recommendations contained in the 356th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants for 2023-24 of Ministry of Culture. Thank you. Again, माननीय श्री V मुरलीधरन जी. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Sri Ajay Bhatt, I rise to lay the statements regarding a 331st report on the action taken by the government on the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, contained in its 320th report on development of tourism infrastructure in the country. B, status of implementation of the recommendations, observations of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture contained in its 338th report on the demands for grants 22-23 of the Ministry of Tourism. धन्यवाद. Dr. L. Murugan. Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation observation contained in the 38th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on ethical standards in media coverage pertaining the Department of Information and Broadcasting. Thank you. Now, motion for election to the Central Advisory Committee. माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी to move a motion for election of one member to the Central Advisory Committee. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to move the motion that in pursuance of Section 3, subsection 2B of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act 1996, read with Rule 11.2 of the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Central Rules 1998. This House do proceed to elect in such manner as directed by Chairman, one member from among the member of the House to be a member of the Central Advisory Committee for a period of 3 years, subject to other provisions of the said Act and rules made by thereunder. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, statutory resolutions. Sri Pankaj Chaudhary ji to move a resolution regarding approval of notification number 01/2024 customs dated 15 January 2024. सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव करता हूं। सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 के अनुसरण में यह सदन द्वारा
अधिसूचना संख्या 1/2024 सीमा शुल्क दिनांक 15 जनवरी 2024 का अनुमोदन करता है, जो 18/1/2024 से मोलासेस HS 1703 के निर्यात पर 50% का निर्यात शुल्क निर्धारित करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना चाहता है। Resolution moved. If somebody wants to speak on this, no. So I shall put the statutory resolution moved by Minister to vote. The question is put. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The resolution is adopted. पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।